The topic we are going to discuss is thermochemistry, and the subtopic is the Born-Haber cycle. The third step is atomization and affinity of chlorine. Third and fourth stages in the expression for delta HX involve atomization of chlorine and conversion of chlorine atoms into ions. The later process is called electron affinity of chlorine, क्योंकि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा ना कि लूज करेगा. सो उसके लिए जो हम प्रोसेस करते हैं डेट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयंस. सो हियर वी हैव क्लोरीन, मॉलिक्यूलर क्लोरीन है, ठीक है. जब हमने इसको गैसियस एटम्स में कन्वर्ट किया, सो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज जो है डेट इज +1 to 1 किलो जूल पर मोल. Here we are converting chlorine gaseous atoms into chloride ions. So यहाँ पे हमने एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए and they are converted into chloride ions bearing a -1 charge. So जो enthalpy change है that is -346 kilojoule per mole. So while the electron affinity for chlorine can be obtained by the reaction half chlorine, ये मॉलिक्यूलर क्लोरीन है, जब हम इसको गैसियस क्लोरीन में कन्वर्ट करेंगे सो डेल्टा एच वुड बी +1 to 1 किलो जूल पर मोल. सिमिलरली जब वही गैसियस एटम्स को हम आयंस में कन्वर्ट करेंगे डेल्टा एच वुड बी -349 किलो जूल पर मोल. जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे एक्सप्रेशन में, डेल्टा एच एक्स इज 108 इज एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, 496 is ionization of sodium, +21 is atomization of chlorine, and -349 is electron affinity of chlorine. So answer is 376 kilojoule per mole. Thus lattice energy for sodium chloride can be obtained. So let's overview all the steps we have read in the previous slides. So सबसे पहले हमने देखा था कि अगर हम सोडियम और क्लोरीन अगर वो अपनी नेचुरल स्टेट्स में, सोडियम अगर सॉलिड है और क्लोरीन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और उससे हम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, सो वी हैव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज -411 किलो जूल पर मोल. बट अगर हम उसी सोडियम को एटम्स में कन्वर्ट करें तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज +107 किलो जूल पर मोल. और फिर उन्हीं एटम्स को हमने आयंस में कन्वर्ट किया, सो आयनाइजेशन एनर्जी डेल्टा एच आयनाइजेशन वुड बी +496 किलो जूल पर मोल. सो सोडियम को हमने सॉलिड से पहले गैसियस एटम्स में कन्वर्ट किया और फिर गैसियस एटम्स को हमने आयंस में कन्वर्ट किया. सिमिलरली फॉर द क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो पहले गैसियस फॉर्म में थी बट मॉलिक्यूलर थी. सो अब उसको हमने एटम्स में जब कन्वर्ट किया सो डेल्टा एच वॉज +121 किलो जूल पर मोल. उसके बाद उन्हीं एटम्स को हमने क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट किया एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वॉज -346 किलो जूल पर मोल. By using all these equations, now we can calculate lattice energy. So, equation was delta H F naught equals to delta H lattice plus delta H x. So, delta H lattice would be delta H F naught minus delta H x. तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. So, delta H of formation was -411 and delta H x was -376. So answer is -787 kilojoule per mole. So the lattice energy of sodium chloride is -787 kilojoule per mole. Here we have a practice MCQ. Lattice energy of sodium chloride is, and the options are 787 kilojoule per mole, -787 kilojoule per mole, 687 kilojoule per mole, -687 kilojoule per mole, and the correct option is -787 kilojoule per mole. And the last thing about the Born-Haber cycle is its significance. Lattice energies are helpful in discussing the structure, bonding, and properties of ionic compounds. So lattice energy हमें तीन चीज़ों के बारे में
इंफॉर्मेशन देती है. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर, सेकंड इज बॉन्डिंग एंड थर्ड इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. So this was all about Born-Haber cycle. I hope you people have understood the lecture very well, and thank you so much.